Good evening, everyone. Welcome to the session. I hope I'm live now. Yeah, live now. Welcome, people who would be watching this, or if you're watching it live, just let me know if everything is fine or not. Audio and video, everything. XAT 2023 Decision Making Marathon Part 1. And before we begin, I have taken QA sessions on this channel also. On the that previous year questions discussion series, we have discussed several quants ka questions. So I thought of like why not discuss decision making, because this is one third of the total uh, जो number of questions है, almost one third weightage है. This can be a very scoring area. Trust me on this. And talking from a student's point of view, not long back I also gave the ZAD exam. That was my strategy. That quants verbal में तो score करेंगे ही, because we have been preparing for that. जो portion LRDI था in CAT, that is substituted with decision making, and if you compare both these sections, this section is much more easier. But what you do need to be careful is, in decision making you'll never find the questions difficult. You will almost have answers to the questions, but there can be very severe mistakes. ठीक है, तुम्हें लगेगा मैं सही कर रहा हूँ बट गलत हो जाएगा. Now what is this decision making section all about? किस टाइप के questions पूछे जाते हैं and all? So mostly business context पे they will give you a scenario. Okay, business context पे they will give you a scenario and then course of action followed by course of action. एक सिनेरियो होगा, that will be followed by course of action. Now फिर तो कोई भी बोल सकता है कि course of action ये होना चाहिए, but if you practically think, not every problem has a unique solution. Like यही solution हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है. That is very vague way of thinking about a problem. It will vary from person to person कि कौन सा person वो problem को approach कर रहा है, उसके ऊपर depend करता है किस context पे the problem scenario has been built and how much has been explained in the question. Now if you look at it from an exam point of view, you will be given a paragraph where the problem statement would be explained and the boundaries of the question constraints will be set. तो तुम उसके basis पे answer करना है. Now sometimes that is not enough, and there is no right and wrong answer in that case. तो that is why बहुत लोगों का mistake हो जाता है, because तुम्हें लगता है कि हाँ मैं सही तो कर रहा हूँ, but then depending on the design and context of the exam it becomes wrong. So you will have to understand कि किस pattern में ये questions पूछे जाते हैं, what is it that the examiner is expecting when you are solving such questions, and कौन से चीजें तुम्हें mind में रखने हैं when you are solving these questions, because maybe every option can be like a possible solution depending on the severity of the situation and real में और क्या क्या inputs मिल सकते हैं to decide. So those things won't be available जब तुम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होगे. जितना दिया है उसके बेसिस पे करना है. तो what is it that the ZAT examiner is expecting from you as a candidate? What kind of thinking process you should have? तो वो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग पार्ट से 20, 30, 40, 50 क्वेश्चंस करने पे यू विल गेट एन आइडिया. ओके, दिस इज व्हाट द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग. इस वे में वो क्वेश्चंस डिजाइन कर रहे हैं. दिस इज हाउ द आंसर शुड बी. ओके, तो वो आइडिया धीरे धीरे तुम्हारा डेवलप हो जाता है. So without further delay, let us begin the session. This is a brief introduction of my profile. You can get my profile link on the description of the video. And if you're new to the channel, do subscribe to the Unacademy CAT-alyst channel and like my video so that it reaches more number of people. And you can watch and join me for my special classes on the Unacademy platform. Okay, so all these are free classes, so you can join me for the special classes using this code. You can unlock all the special classes for free. And I'm happy to announce the Unacademy CAT 2022 toppers, very good results. Okay, the 60 plus people, 99 plus and still counting. So congratulations to all the toppers. And जो लोग अभी ZAT देने जा रहे हो, be motivated. If they can do it, you can also do it.
just believe in your abilities and learn from your mistakes. Some people might have scored a 93, 94, 96, कोई 90 में रह गया होगा. That doesn't mean you didn't deserve to be there. Maybe you did a few mistakes, and what you can learn from it, how you can rectify it, how you can come up with an improved like approach for the ZAD exam, and focus on those things. A little bit of introspection, keep practicing, do not give up. Okay, the journey is not over yet. Still a lot of exams to go, interviews to go, and then finally the end goal is to crack a good B school. So focus on that and do not give up. That में भी बहुत लोग they like turn around the tables magically. So you can also do it. So be motivated and accordingly start preparing. All right. So let us start with the discussion. So I have taken up a few questions from the previous years. We'll try and see these questions how they can be approached and solved. So let us see. ये भी एक previous year paper ही है. Now क्या दिया है? Problem statement let us try and understand, and then accordingly we'll see solution क्या होगा. Indian government may hold top executives responsible if state-run power companies fail to meet performance targets and punish them with fines and transfers. The strict performance parameters are aimed at ensuring that at least the reduced target of 62,000 megawatt of generation capacity addition is achieved before the end of the second plan, said a power ministry official. So it's talking about some kind of an arrangement between a power company, private power company, and the government. एंड बोल रहे अगर ये जो रिड्यूस टारगेट है, मतलब पहले इससे भी ज्यादा टारगेट था, अभी मे बी फॉर सम रीजन दे हैव रिड्यूस द टारगेट, अगर ये मीट नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट विल होल्ड द टॉप एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल कि इनके वजह से नहीं हुआ, एंड दे विल बी पेनलाइज्ड इन सम काइंड ऑफ वे. ओके, फाइन्स होगा, ट्रांसफर्स होगा, एंड परफॉर्मेंस टारगेट्स जो है वो अगर मीट नहीं होते हैं. The performance of chairman and managing directors of the power public sector units in project implementation will be assessed as per the terms and conditions stipulated in the company's memorandum of understanding MOU with the power ministry. तो जो PPPP होता है, public private partnership होता है, तो this is a power sector unit and उसका government के साथ एक MOU, okay, memorandum of understanding. तो memorandum of understanding में होता क्या है, stipulations होते हैं and constants of the collaboration एंड डिलीवरेबल्स होते हैं, क्या डिलीवर करोगे, किस प्राइस पे, प्राइस पॉइंट्स का डिस्कशन हुआ होगा, पेमेंट मेथड्स एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन द एमओयू एंड बोथ द पार्टीज वुड हैव अग्रीड एंड देन साइन हुआ होगा. नाउ इफ दिस प्राइवेट एंटिटी जो पीएसयू जो उनको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, इफ दे डोंट लिव अप टू इट, नॉट एग्जैक्टली प्राइवेट एंटिटी बट गवर्नमेंट डायरेक्टली तो नहीं कर रहा है, पावर जनरेशन थ्रू द पीएसयू कर रहा है, तो गवर्नमेंट एंड पीएसयू का ये अग्रीमेंट है. वहां पे नहीं कर रहा है तो they will hold the managing director and the top executives responsible. उनको उनके ऊपर ब्लेम आएगा कि why didn't you meet the target. Now performance parameters of executives have come under strict scrutiny due to a lack of progress in capacity addition program. तो कितना capacity addition करना है, 62,000. okay, this is a new target and इतना capacity addition करना है. But what happens is, while the target for the 5-year plan has already been scaled down from 78,500. So from 78,500, reduced target is 62,000. 62,000 means it is like 14,500 or 14,400 per year, around that much. 5 साल में अगर उतना करना है तो 14,400 per year, sorry 12,400, 14 क्या लिख रहा हूँ, 12,400 अप्रॉक्स पर ईयर उतना होना चाहिए. मतलब आई एम नॉट सेइंग यूनिफॉर्मली उतना होना चाहिए, बट मोर और लेस ऑन एन एवरेज. अगर मेरे को 5 दिन में 50 काम करना है तो पर दिन पर डे 10 टास्क तो करने चाहिए ऑन एन एवरेज. हो सकता है आई डू 8 टुडे एंड 12 टुमारो, बट ऐसे नहीं कि आज एक कल एक फिर परसों 40 काम एक साथ करूँ, तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑल्सो. तो मोर और लेस 12,400 पर ईयर होना चाहिए था. बट व्हाट हैपेंस इज द फर्स्ट 3 years में इट शुड हैव बीन अराउंड 37,200, बट देख रहे हैं दैट ओनली 22,302 है, तो काफी पीछे चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है. तो
3 साल में 22,000 पे, हाउ विल दे रीच अनदर 40,000 in the next 2 years? Now, if you were the chairman of one of these power PSUs, which of the following statements, all of which are assumed to be true, could best be used in order to strengthen your case against the government holding top executives responsible? Now, try and think, what is the question expecting from you? Let us say you are the chairman of this PSU and your PSU is not able to deliver on the new target that is being assigned, 62,000. Now, ये paragraph is a little like too short to understand क्यों नहीं हो रहा है ना. बहुत सारे questions अभी हमें पूछ सकते हैं कि टारगेट क्यों नहीं मीट कर रहे हैं. विल नॉट अज्यूम एनीथिंग. ओके, डोंट अज्यूम कि हाँ पीएसयू है तो काम नहीं होता. बहुत लोग ऐसे खुद से सोच लेते हैं. डोंट अज्यूम एनीथिंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ व्हाट इज मेंशन. तो बहुत सारे क्वेश्चन है क्यों काम नहीं हो पा रहा है. ओके, एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में वाई पहले क्यों रिड्यूस हुआ था 78,500 से 62,000 क्यों हुआ था, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट रिडक्शन, एंड और क्या क्या कॉन्स्टेंट है प्रोजेक्ट्स का टेक्निकलिटीज में. लाइक व्हेन आई एम रेजिंग द फ्रेश पावर कैपेसिटी जनरेशन जब मैं कर रहा हूँ तो और क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है, व्हाट ऑल फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल, एंड इधर इट्स अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स या मे बी हो सकता है लेबर स्ट्राइक वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, या मे बी लैंड एक्विजिशन इज अ प्रॉब्लम और समथिंग सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम कैन बी देयर जिसके वजह से हो सकता है काम पीछे चल रहा है. सो वी डोंट एग्जैक्टली नो क्या प्रॉब्लम हो रहा है. तो वी विल स्टिक टू व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो अभी समझ आ रहा है क्यों मैं पहले बोला कि देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, बिकॉज इट विल ऑलवेज डिपेंड एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन नॉट अ लॉट कैन बी एक्सप्लेन्ड. तो जो दिया है उसको लेके विल ट्राई एंड सी हाउ वी कैन आंसर दैट. Now here you will have to assume the role of the chairman of the PSU. Now if you are the chairman, तो तुम देख रहे हो गवर्नमेंट अब हम अगर टारगेट मीट नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू लाइक ब्लेम अस एंड माय टॉप एग्जीक्यूटिव्स. तो हाउ डू आई डिफेंड, ओके, हाउ डू आई डिफेंड माय कंपनी एंड हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट ओके दिस इज व्हाई ये नहीं हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग like could best be used to strengthen your case? If I am the chairman, what will strengthen my case? My case is like the government blaming me that तुम responsible हो कि target meet नहीं किए. So I'll have to come up with something to explain why I couldn't. Okay, so that our company is not going to take the blame. तो क्या हो सकता है? Let us take a look at the options. The labor unions owing allegiance to the ruling party at the center are not allowing a work to progress. Just a second. The labor unions owing allegiance to the ruling party at the center are not allowing work to progress with their demands for wage hikes that are untenable. तुम ये एक्सप्लेन कर रहे हो गवर्नमेंट को कि लेबर यूनियन जो रूलिंग पार्टी दे आर लाइक लॉयल टू द रूलिंग पार्टी एंड वो काम करने नहीं दे रहे, वेज हाइक एंड ऑल बोल रहे हैं, दैट आर अनटेनेबल अनअवॉइडेबल. तो ये एक बिग प्रॉब्लम, दैट इज वाई काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है. ओके, तो इज अ जनरल प्रॉब्लम. तो तुम ये डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो कि गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, तुम लेबर यूनियन को ब्लेम कर रहे हो एंड दैट इज क्वाइट जेन्युइन. ऐसा होता है पीएसयूज में. Now the actions of the mid-level management are not in line with the objectives laid down by the top management. अगर तुम ये बोल रहे हो तो तुम you are like not taking or defending your own company. तुम ही खुद के कंपनी को भी ब्लेम कर रहे हो. तो how do you strengthen your case? You are weakening your case now. तो गवर्नमेंट बोलेगा हाँ इसीलिए तो उनको फायर कर रहे हैं. तुम्हें अपना कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को डिफेंड करना है. तो टू तो कैन नॉट बी द आंसर. तो जहां जहां पे टू है वो सारे ऑप्शन आर रिजेक्टेड. तो ईदर इट इज ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये दोनों में से आंसर आएगा. The delays have been due to difficulties in obtaining funds at a reasonable interest rates on account of recessionary conditions. So this is also a genuine problem. Shortage of funds हो रहा है because ये पहले प्लान किए होंगे 3 साल पहले या मे बी उससे 1 साल पहले MOU साइन हुआ होगा कि नेक्स्ट 5 years में आपको ये काम करना है. But then recession came in and then bank rates would have been changed and इतना easily उन्हें लोन नहीं मिल रहा होगा. So there is like a lack of funds, okay, scarcity of funds. तो उनका फंड एलोकेशन क्योंकि ज़्यादा फास्ट हो नहीं पा रहा है, मे बी दैट इज वाई द वर्क हैज रिड्यूस्ड. तो दैट इज ऑल्सो जेन्युइन प्रॉब्लम. उसमें आप टॉप एग्जीक्यूटिव्स को ब्लेम करने से क्या होगा. तो दैट इज हाउ सीईओ कैन रेस्पॉन्ड एंड डिफेंड
तो ठीक है, फेयर इनफ। 4 ये बोला वी आर नॉट टू ब्लेम, द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इनफ टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फ्यूल टू पावर द एग्जिस्टिंग प्लांट्स, लेट अलोन द न्यू प्लांट्स। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो गवर्नमेंट को बोल रहा है कि नहीं, सिर्फ वी आर नॉट टू ब्लेम, आप तो एग्जिस्टिंग प्लांट्स को भी आप फ्यूल जो नहीं करो। इफ ट्रू बोला है, लुक एट दिस, ऐसे नहीं कि वो आउट ऑफ ब्लू वो ब्लेम कर दे रहा है गवर्नमेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑल ऑफ विच आर अज्यूम टू बी ट्रू नाउ, सो दिस इज ट्रू। तो गवर्नमेंट को उनको भी अगर वो दिखाएगा कि नहीं आप भी यहाँ पे गलत हो, इट्स नॉट ओनली अस हु आर रॉन्ग, तो देन द गवर्नमेंट विल टेक अ स्टैंड कि हाँ ठीक है, तो वी कैन नॉट ओनली ब्लेम देम, तो दिस इज ऑल्सो फेयर इनफ। The government had ignored the infrastructure availability like roads and environmental clearance required for such products, therefore set an unrealistic target। तो ये इसीलिए इसको रिजेक्ट अभी करेंगे, because तुम at the end of 3 years you can't say the target is unrealistic। You have signed the MOU, means you would have estimated like this is how the things are going to proceed and we can deliver, इसीलिए तो साइन किए। तो तुम साइन करने के 3 साल बाद बोल नहीं सकते the targets are unrealistic। So that is why 5 is also rejected। So 1, 3 and 4 I will go with option C। So quite interesting questions। इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस आएंगे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल फाइंड इट रियली लाइक एक्साइटिंग टू सॉल्व, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इस फील्ड में। बिकॉज वंस यू डू MBA एंड देन जब तुम काम करना स्टार्ट करोगे, मोर और लेस योर रियल लाइफ इज गोइंग टू बी अबाउट दिस ओनली। Okay, every day you will have to decide, make decisions, make choices, yes, no, and then you'll have to live up to it, and you have to maintain a particular क्या बोलते हैं उसको, ethics of work। You cannot foul mouth like bad mouth your company बाहर जाके, even if you don't agree to a lot of policies that are happening in your company, that's very unprofessional अगर तुम outright बोल दिए। तो बोलने का कुछ सिचुएशंस होता है, बट अभी के लिए सोच के चलो बोलना नहीं है, यू विल हैव टू डिफेंड इट एट एनी कॉस्ट। but then when you are taking any decision you have to consider all stakeholders into action। Never go for any extreme actions। Do not have any biasness। So these are some points that you can keep in mind। Your decision should be positive and long term। पॉजिटिविटी भी दिखना चाहिए तुम्हारे डिसीजन में, एंड लॉन्ग टर्म के बारे में तुम सोच रहे हो नहीं। Okay, these things the examiner looks for as criteria when you are deciding something, so keep these things in mind। You will see the questions will be very easy to solve and आराम से हमें आंसर मिलेगा। Okay, so just to point out, if I'll have to write those few points, तो पहला point जो framework में key points, no extreme actions, no extreme actions, take all stakeholders, consider all stakeholders, okay, your actions should be positive, एंड लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए तुम्हारा डिसीजन, एंड नो बायसनेस। तो ये कुछ फैक्टर्स तुम्हें माइंड में रखने चाहिए वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। इनको अगर पॉइंट्स में तुम माइंड में रखोगे, यू विल सी ऑल क्वेश्चंस विल बी इजियर। लेट अस ट्राई एंड पुट इट इनटू यूज इन द क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स फॉर पीपल टू रीड दिस। एक बार जस्ट पढ़ लो, फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सिचुएशन हियर। Just read this, people attending this live, just read this and feel free to discuss। Okay, this is a class of discussion, let us discuss and have our opinions and all। तो उसमें ज़्यादा मज़ा है सॉल्व करने के लिए। तो लेट अस डिस्कस क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पहले ये पढ़ लो एंड प्लीज फील फ्री टू लाइक शेयर योर ओपिनियंस एंड यू कैन हैव सेकंड थॉट्स, या इफ यू आर थिंकिंग ऑन द सेम प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो फील फ्री टू शेयर योर आइडियाज, विल बी हैप्पी टू डिबेट। ओके, so the problem here is CEO of ABC Telecom। So ABC is a company, telecom company, and the CEO is in a quandary। Quandary means in a situation where he is not able to decide। Okay, dilemma may not be the right like replacement of the word, but something like that। Quandary, क्या करेगा, कौन सा चीज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, is quite confused। Since he received the telephone call in the morning from his counterpart at LMN। Counterpart मतलब उनका एक rival है LMN company।
एलएमएन इसको क्या कॉल किया है, तो ये सीईओ है, तो इसका सीईओ, एलएमएन का सीईओ एबीसी के सीईओ को कॉल किया है किस बारे में? Both companies were engaged in a bitter experience a couple of years ago when they had attempted to merge. Couple of years ago, they had made a merger attempt. Merger समझते हो, when two companies come together. ओके, जैसे मर्जर एक्विजिशन होता है, तो दोनों कंपनी मिल जाते हैं, जैसे दो बैंक, वो आइडिया वोडाफोन का मर्जर हो गया, तो टू कंपनीज विथ म्यूचुअल वेस्टेड इंटरेस्ट दे कम टुगेदर एंड दे बिकम अ बिगर एंटिटी, उसको मर्जर बोलते हैं। और एक्विजिशन मीन्स, अगर मर्जर मीन्स म्यूचुअली कोलैबोरेट किए, और एक्विजिशन मीन्स एक कंपनी दूसरे को खरीद लेता है, उसके एसेट्स एंड लाइक एवरीथिंग, लाइबिलिटीज एंड उसके जितने भी कैश एंड ऑल, कस्टमर्स एक्विजिशन जितने भी हुए होंगे, कॉन्टैक्ट्स एंड एवरीथिंग, वो कंपनी का हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइप का, दैट इज एक्विजिशन। तो ये दोनों कंपनी पहले मर्जर के लिए ट्राई किए थे, बट दैट रिजल्टेड इन अ बिटर एक्सपीरियंस, दैट मीन समथिंग वेंट रॉन्ग, अच्छा नहीं हुआ था। ओके, विद द इंटेंशन, क्यों मर्जर किए थे? विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ बेहमथ टेलीकॉम कंपनी, तो दोनों मिल जाएंगे, बड़ा सा टेलीकॉम कंपनी बनाएंगे, तो मार्केट मोनोपोली एंजॉय करेंगे, दैट वाज देयर गोल, possibly the largest in the world. Okay, the merger had fallen through क्यों? पहला, opportunistic behavior। किसका opportunistic behavior? Opportunistic behavior on the part of Mr. Das, the CEO of LMN। तो ये जो LMN का CEO है, उसका opportunistic behavior। What kind of opportunistic behavior? Now what he did is, ABC के साथ merger discussions चल रहा है, but he is also approaching other like suitors, कि मैं उनके साथ भी डिस्कशन कर लूँ, सो दैट मे बी आई विल बी एबल टू नेगोशिएट बेटर एंड फोर्स एबीसी टू पे अ हायर प्राइस। जो हम यूजुअली करते हैं, 4-5 दुकान में जाके घूमते हैं एंड फिर प्राइस पता लगाते हैं, फिर नेगोशिएट करते हैं, अरे वहाँ पे तो इतने में मिल रहा है, तो आई लाइक दैट। तो उसका इंटेंशन है टू मर्ज विद देम, बट ही वांट्स अ हायर प्राइस, अपना बेनिफिट देख रहा है, तो इट्स अ अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर। ही इज नॉट थिंकिंग फॉर द कंपनी, ही इज थिंकिंग फॉर हिमसेल्फ। Further, there were reports of attempts by the management of Element to scuttle the deal, sabotage, okay, कैंसिल हो जाए। एलएमएन के जो मैनेजमेंट है, उन्हें पसंद नहीं है कि ये मर्जर हो, तो दे वर डूइंग समथिंग टू स्कटल द डील। बैक देन एबीसी हैज आल्सो फेस्ड, ओके, सेल्फ सैबोटेज मैं बोल सकता हूँ, एंड देन जो शेयर होल्डर्स हैं, वो भी अपोज कर रहे थे, किसके शेयर होल्डर्स ना, एबीसी के शेयर होल्डर्स, उन्हें पसंद नहीं दैट ये उनके साथ एक्विजिशन जो मर्जर उनका हो। तो ये प्रॉब्लम्स हुआ था 2-3 साल पहले। तो अभी क्या हो रहा है, ये फिर से कॉल किया है एलएमएन का सीईओ। तो इमेजिन यू आर द सीईओ ऑफ एबीसी एंड यू अगेन गॉट अ कॉल, एंड 2 साल पहले तुम सोचोगे कि इतना सब कुछ हुआ था, एंड देन अभी ये 2 लाइन में बता दिया क्या प्रॉब्लम हुआ था, बट नाउ थोड़ा सोचो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ दैट वुड हैव इम्पैक्टेड द बिजनेस। यू आर रेडी फॉर अ मर्जर टॉक्स एंड डिस्कशंस एंड प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गया होगा, and then this kind of something comes up, and shareholders are unhappy, maybe some shareholders would have withdrawn, and market में that would have affected the market sentiment anyways, and company में if management is not happy, एक management चाह नहीं है वो merger हो, वो चाह नहीं रहे, तो they might have resisted, some people might have like left the company और resignation दे दिए होंगे, या some kind of disturbance would have definitely happened। मर्जर कम्स एट अ कॉस्ट ऑल्सो, ऐसे नहीं कि आप बोल दिया, आज बोल दिया, कल मर्जर हो गया, दीज आर ऑल बिजनेस डिसीजन, तो इट कम्स एट अ कॉस्ट। तो इस सब के बाद भी कैंसिल हो गया था, तो जस्ट ट्राई एंड थिंक ऑफ द सिचुएशन ऑफ दिस सी, उसके माइंड में क्या हो रहा है, उसका साइकी थोड़ा समझने के लिए ट्राई करो। नाउ सिंस देन a lot has changed for both companies. The bleak economic conditions, weak, okay, not so strong economic conditions due to recession had led to a drastic fall in the market value of both the companies। तो अभी इकोनॉमिक ठीक नहीं चल रहा है, तो रिसेशन है, दोनों का मार्केट वैल्यू कम हो गया है, विथ एबीसी कंपैरेटिवली लूजिंग मच मोर इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। तो एबीसी बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू लूज कर रहा है। रेजिंग मनी हैज बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर बोथ द कंपनीज, तो पैसा मार्केट से रेज नहीं हो पा रहा है, स्पेशली फॉर एलएमएन, इनके लिए पैसा रेज करना डिफिकल्ट है। ऑन द ब्राइटर साइड, for ABC, the opposing shareholder has recently sold off his stake to another investor who earlier had supported the original merger deal with LMN couple of years ago। समझ रहे हो?
तो जब 2-3 साल पहले मर्जर हुआ था, एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपोज्ड, वो पूरा स्ट्रिक्टली अगेंस्ट था कि मर्जर ना हो। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हुआ, वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर अपना शेयर बेच दिया अनदर इन्वेस्टर को। तो अब ये जो नया इन्वेस्टर है, दैट इन्वेस्टर वाज प्रो मर्जर, वो चाह रहा था कि ये मर्जर हो। तो दैट मीन्स इट इज वन लेस प्रॉब्लम टू वरी अबाउट नाउ। एटलीस्ट ये प्रॉब्लम तो सॉर्टेड है। जो शेयर होल्डर ऑपोजिशन था इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, नाउ दैट पार्ट इज सॉर्टेड, तो वन लेस प्रॉब्लम टू वरी अबाउट। बट व्हाट इज द क्वांडरी एंड वो सीईओ क्या करना चाहिए, दैट इज पॉसिबली द क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी। लेट अस सी द क्वेश्चन। What do you think should be the answer? People attending live, let's have a discussion on this. What do you think would be the answer to this? Let me know your answer in the chat section. What do you think is the answer to this? Which of the following could be the most appropriate line or lines of thought of CEO of ABC? CEO of ABC to adopt in response to the offer by Element. तो ये फिर से मर्जर के लिए ऑफर किया है। तो एज द सीईओ ऑफ एबीसी, तो तुम्हें कैसे सोचना चाहिए? Which one should we go for in this? Just write A, B, C, D, whatever like you think is the correct answer, and then we'll have a discussion. Any answers? Feel free to answer this. I'll wait for a few seconds. Let me know your answers, then we'll discuss. Okay, let us see the options one by one. The first statement is Pragya E. Okay, once bitten, twice shy. Okay, that means एक बार धोखा खाते हैं तो second time more careful. So there is simply no way I can think of resuming talks with 11 after their unethical behavior the previous time around. I would rather spend my time on merger discussions with other companies. Now this is a little too extreme. Okay, as the CEO, he should always look for opportunities, and permanent enemies and all वो सब कोड का कुछ प्रॉब्लम, मतलब वहाँ पे वैल्यू है नहीं. It has gone wrong once, that doesn't mean it will go wrong again, and this time things have changed, situation is like different, and the discussions will be very different from the last time. So they can like he can actually take advantage of this. Last time जो कर नहीं पा रहा था, he can actually leverage the bad things that had happened last time to his advantage this time. So thinking that simply no way is a little too extreme as like a course of action. So we'll ignore this. The deal may make less business sense this time around. However, if it goes through, I will become the CEO of the world's largest telecom company. So let us try. This is being opportunistic, biased. वो अपने लिए सोच रहा है दैट अभी डील चाहे कैसे भी हो, मैं तो बड़ा कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा, तो लेट्स गो विद दिस. दैट्स नॉट हाउ यू शुड थिंक एज अ सीईओ. यू हैव टू कंसिडर एवरी पर्सन, एवरी स्टेक होल्डर. दो कंपनी जाएंगे, सो मेनी एम्प्लॉइज, सो मेनी कस्टमर्स, व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट. सो आई हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग. So I cannot just think for myself that I will become the CEO of the world's largest telecom company. So clearly this is not the answer. तो वन जहाँ पे होगा वो इग्नोर कर लेंगे, टू जहाँ पे हुआ वो भी इग्नोर कर लेंगे. So by default I am left with this. But let us see what is wrong with the other like options also. I will resume talks only if they provide guarantees as to reimbursement of our expenses incurred in the event of the deal not materializing. So this is like working in bad faith. Okay, that means तुम कर तो रहे हो मर्जर, बट तुम कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि दिस विल नॉट वर्क. तो पहले से ही मैं केयरफुल रह जाता हूँ कि मर्जर चाहे फेल हो जाए, अपना एक्सपेंसेस बस आप बियर कर लो.
So that is operating in bad faith, especially when two businesses are coming together for a merger. So trust and transparency and clarity of thought रहना ज़्यादा important है. So again, not the best course of action. And again, we cannot emphasize on this much, because we don't know last merger में actual cost कितना involved था. What if the cost is too high? It will depend on what kind of business है. ये telecom sector का business है, and when merger हो रहा है, especially customer acquisition is why they are merging, and maybe assets and network bandwidth अपना बढ़ाने के लिए, वो sector specific the merger definition will change. ओके, बिकॉज टेलीकॉम सेक्टर, अब दो टेलीकॉम कंपनीज अगर मर्जर हो रहे हैं, तो आइडिया वोडाफोन मर्जर हुए, मर्जर होने का बेनिफिट क्या हुआ उनके साथ? तो इनका जो एसेट्स है, एक टेलीकॉम कंपनी का एसेट्स क्या क्या होगा, जो उनका टावर होगा, नेटवर्क बैंडविड्थ के लिए वो जहाँ जहाँ पे अपना इक्विपमेंट्स लगाए होंगे, दोज थिंग्स विल बी शेयर्ड, तो दे कैन वाइडन देयर रेंज सिग्निफिकेंटली, एंड देयर कस्टमर बेस दोनों का ऐड हो गया टू वन कस्टमर बेस. तो दैट इज मे बी द एडवांटेज, बट उसमें कॉस्ट कितना लग रहा है, दैट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ इन दिस क्वेश्चन. मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ. इफ द कॉस्ट इज टू हाई, मे बी द सीईओ थिंकिंग अबाउट द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इज करेक्ट, बट दैट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, एंड ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. तो 3 को भी इग्नोर करेंगे. 4, let me not be biased against dealing with LMN. If we can secure the deal at a reasonable low price, benefiting our shareholders, perfect. That's how a CEO should think, that my actions should be generating more profit for our shareholders. So if I can negotiate this time at a reasonably low price, and it is going to benefit my shareholders, they will be happy, so why not? Then 5th, I am not sure if we can raise money now. In any event, they are the ones facing greater financial problems, so let us not hurry now. We might have an opportunity to buy them out at a cheaper price. This is again quite clever. Not the best course maybe, but again not bad also. वो सोच रहा है कि मर्जर क्यों इस बार, अगर उनका प्रॉब्लम है तो लेट मी लाइक वेट फॉर अ फ्यू मोर, लाइक और थोड़ा टाइम वेट करते हैं, एंड मे बी वी कैन लाइक अक्वायर देम, डायरेक्टली बाय आउट कर लेंगे एट अ चीपर प्राइस, तो बाय मर्जर के लिए जाएंगे. समझ रहे हो? इट्स लाइक नेगोशिएटिंग, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन. तो 4 and 5 क्लियरली आर गुड ऑप्शंस to go for. Hello people, good evening, good evening. तो समझ रहे हो what kind of questions decision making section is all about. So quite interesting when you solve this, it is quite interesting. Real life situation problems देंगे and उसी हिसाब से हमें सोचना है. Let's take a look at this one. What do you think is the answer of this? इसका आंसर क्या होगा बताओ? The merger of ABC and LMN has been confirmed after detailed negotiation, with LMN holding the majority share of the resultant entity. LMN has financed the merger by taking debt at higher than market interest rates from its bankers, in the hope that it will be able to streamline operations and reduce costs in the resultant entity, which will allow it to repay the loan. Let us understand this. ये जो क्या बोला, अभी हम पढ़े थे कॉन्टेक्स्ट में दैट मार्केट से पैसा उठाना डिफिकल्ट हो रहा है, ब्लीक इकोनॉमिक कंडीशंस, रिसेशनरी कंडीशंस, पैसा उठाना प्रॉब्लम हो रहा है. तो अंडर दैट सिचुएशन LMN हैज फाइनेंस दिस मर्जर. कैसे फाइनेंस किया? हायर देन मार्केट रेट में पैसा उठाया. दैट मीन्स अगर मार्केट रेट 10% है, वो 15% में भी उठा है, एंड विथ द कॉन्फिडेंस दैट आई यूज दिस मनी टू स्ट्रीमलाइन माई ऑपरेशंस एंड रिड्यूस कॉस्ट and make this overall resultant entity profitable, and I'll be easily able to pay off the debts. So that is why वो पैसा उठाया वो लेके. So that is is the overall situation here. पैसा नहीं मिल रहा था, keep that in mind. पैसा मिल नहीं रहा था, वो क्लियरली क्वेश्चन में ये लिखा था, रेजिंग मनी इज डिफिकल्ट, ओके, स्पेशली फॉर LMN. तो वो इसीलिए हायर देन मार्केट रेट में पैसा उठाया है वो. Now if you are an investor, now your role has changed. पहला क्वेश्चन तुम CEO के हिसाब से सोच रहे थे. Now if you are the investor, okay, and you are looking to invest in telecom companies, which of the following would be the strongest reasons for staying away from investing in the resultant entity? Now तुम्हें भी ये सब चीजों के बारे में पता है, and you are an investor, not from the company, outside person. तुम ढूंढ रहे हो कि मैं कौन सा टेलीकॉम कंपनी में इन्वेस्ट करूं. Now out of these 5 options A, B, C, D, E, which of the following would be the strongest reasons to stay away?
मीन्स सबसे ज्यादा नेगेटिव क्या है कि ये पढ़ के तुम डिसाइड कर लो कि मैं करना ही नहीं है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट. ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन टू स्टे अवे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. E, correct, correct. The new entrants in the telecom market were coming with better offers for the customers. So offer is not the only criteria of deciding investment. So maybe it's one of the reasons, but cannot be the strongest reason. Market would be as competitive as ever for the resultant entity, thus providing no guarantee for success. Guarantee of success तो कभी होता ही नहीं है. So an investor never invests only on the basis of guarantee of success. The combined management did not at present have any grand strategies to the investors. Might be one of the reasons. क्योंकि जब कोई इन्वेस्ट करता है तो दे लुक एट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, फ्यूचर प्लान्स, कोलैबोरेशंस, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स, R&D क्या हो रहा है, एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड कंपनी कितना डेट उठाया है, किसके साथ मर्जर एक्विजिशन हुआ है नहीं, व्हाट हैज बीन द लास्ट फ्यू इयर्स बैलेंस शीट उनका देखते हैं. तो ये सब फैक्टर्स देख के तुम इन्वेस्ट करोगे. तो अभी उनका कोई वैसा आज सच ग्रैंड स्ट्रेटेजीज नहीं है. तो एज एन इन्वेस्टर, इफ नॉट बीइंग एप्रीहेंसिव, एटलीस्ट आई नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू अपील मी. समझ रहे हो, दैट्स अ डिफरेंस. लाइक आई एम नॉट नेगेटिव, बट एटलीस्ट आई एम नॉट एनकरेज्ड कि यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ. क्यों करूँ? नथिंग दैट इज अपीलिंग मी दैट हाँ कोई स्ट्रैटेजी है या ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो मे बी मैं अभी पैसा लगाता हूँ, मेरा पैसा ग्रो करेगा. आज सच वैसा कुछ है नहीं. बट स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन फॉर स्टेइंग अवे, दैट कैन नॉट बी अ रीजन फॉर स्टेइंग अवे. ओके, स्टेइंग अवे मीन्स यू आर नाउ एप्रीहेंसिव. वो जो यू विल नॉट इन्वेस्ट, वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तुम्हारा बनना चाहिए. So that should be something very negative. So again, we'll not go with this. ABC's management was given to Mr. Das, who was a known opportunist. So this really doesn't help. वहाँ पे opportunist होके वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मे बी वन ऑफ द रीजन हो सकता है. बट ये थोड़ा सा पर्सनल टाइप का हो रहा है. ऑल्दो इट मैटर्स, सीईओ का रेपुटेशन भी मैटर करता है एक कंपनी का मार्केट सेंटिमेंट एंड स्टॉक प्राइसेस के ऊपर, बट नॉट दैट मच. LMN was using high cost debt to purchase another company. एक तो high cost debt लिया है, higher than market interest rate पे high cost debt to purchase another company in the same industry facing similar problems. But ये क्या कर रहे हैं, वो पैसा लेके और एक कंपनी को खरीदने जा रहे हैं. ओके, वही टेलीकॉम सेक्टर में जो जिसका खुद भी वही प्रॉब्लम है. इट्स नॉट लाइक इट्स सम, इट्स अ कैश काउ और लाइक इट्स very like lucrative offer to buy that particular company. That company is going through turmoil and उनका भी profit नहीं हो रहा है. They are losing on market value and everything. And ये high cost debt लेके वो कंपनी को खरीदने जा रहे हैं with no visible advantage for the combined entity over competitors. तो तुम as a investor, this can be one of the reasons to stay away. मेरा पैसा यहाँ पे लगा है क्यों? ये तो प्रॉफिटेबल कंपनी भी नहीं है, इनको अक्वायर करके होगा क्या? तो आउट ऑफ ऑल डीई, सी डी ई मे भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था. बट सी क्यों रॉन्ग हुआ, एक्सप्लेन वाई सी रॉन्ग. बिकॉज सी इज नॉट लाइक मेकिंग यू लाइक स्टे अवे फ्रॉम द कंपनी. मे बी यूल थिंक ओके चलो अभी स्ट्रैटेजी नहीं है, आगे चलते हैं तो देखते हैं. द एटीट्यूड विल बी दैट. इट्स नॉट लाइक मैं इस कंपनी से दूर रहता हूँ, क्यों इनका स्ट्रैटेजी नहीं है. विल नॉट थिंक इन दैट वे. एंड डी is a little personal. Okay, that cannot be reason. And हो सकता है this person was an opportunist back then, but now he has changed. He is holding the majority share of the resultant entity, so he has maybe the decision maker वो है. That doesn't mean like वो पूरा सब डुबा देगा and he is not a good decision maker. तो थोड़ा little biased होगा, not to give this person another chance. So as compared to D, E is a much better option to go for. Okay, hope it is explaining. And think of this one. थोड़ा अजीब सा लग सकता है ये क्वेश्चन. पीपल अटेंडिंग लाइव डू लाइक द सेशन. ओके, जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हो, डू लाइक द सेशन सो दैट इट रीचेस आउट टू मोर पीपल. एंड इफ यू न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी कैटलिस्ट चैनल. जो लोग लाइव कर रहे हो एक बार लाइक कर दो सेशन को एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस. Standalone question. The main issues of interpretation arising from the work of professionally trained anthropologists are that they are late in colonial post-colonial trajectories because professional training shapes their interpretations. Okay,
However, within the field of interest and training, their works are most thorough and systematic. The best conclusion drawn from the above paragraph is analogous. So it's talking about anthropologists, human behavior and all के बारे में, जो पोस्ट colonial और colonial trajectories, उसके बाद कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है द सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन एंड ऑल, एंड तो बोल रहा है कि उनका जो इंटरप्रिटेशन है, इट इज बीइंग शेप्ड इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वे बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेनिंग. तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग शेप्स देयर इंटरप्रिटेशंस. तो अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो उनका जो इंटरप्रिटेशन, यू कैन नॉट बी मोर थोरो. तो अगर तुम्हें थोरो और सिस्टमैटिक होना है तो यू विल हैव टू डू विथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर वे में इंटरप्रिटेशन को शेप करता है. ओके, बट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में तुम देखोगे तो उनका काम ज़्यादा सिस्टमैटिक है, ज़्यादा थोरो है. दैट मीन्स इफ दिस इज हैपनिंग दिस कैन नॉट हैपन एंड वाइस वर्सा, ए और बी काइंड ऑफ अ थिंग. तो एनालॉगस कंपैरिजन हमें ढूंढना है यहाँ पे. Heisenberg uncertainty principle, which states that the speed and position cannot be determined simultaneously. Physics का concept है. Even if you don't know the physics, just look at the nature of argument. Uncertainty principle, तो मान लो एक particle is moving, तो या तो मैं particle का velocity निकाल लूँ या तो मैं particle का position निकाल लूँ. तो if I want to calculate the position of the particle, I will have to do away with the velocity, and तभी जाके मैं बोल पाता हूँ कि इस point पे है. नहीं तो अगर मुझे पोजीशन गिव अप करेंगे तभी जाके मैं वेलोसिटी बोल सकता हूँ. दैट्स द मीन. ओके, स्पीड एंड पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड साइमल्टेनियसली. ओके, स्पीड डिटरमिन कर रहा है तो डू अवे विद द पोजीशन एंड सो ऑन. तो ये क्लियरली एनालॉगस है इसके साथ. लेट्स लुक एट द अदर आर्गुमेंट्स. कल्चरल रिलेटिविज्म, which states that two or more than two cultures cannot be compared. Again, nothing that is helping this cause. Personal relativism, which says that one should not study anthropological phenomena for personal gains. Again, way out of scope. Conclusive relativism, which states that the anthropologists should not knowingly color their findings. Again, not. Communicative relativism, which states that anthropologists should not be selective in communicating their findings. So it's not analogous. ठीक है, D and D kind of makes sense, but analogous means the framework or the structure of the argument, उसी structure में वो आना चाहिए यहाँ पे. तो यहाँ पे structure of the argument is, अगर वो ज़्यादा professional training पे focus कर रहे हैं तो interpretations can be a little biased depending on how they have been trained, but within the field of interest they can be more innovative, systematic and thorough in their work. So thorough, systematic, innovative work, so do away with professional training. More professional training, less thorough, systematic work. So it's like that. So you have to do away with one to get the other. So उसी lines पे ये arguments हो रहा है. Okay, hope it makes sense. Let us try this one. Try this one. Welcome all of you to the session. I'll wait for a few seconds. Just read the context of this problem statement and let me know your answer in the chat section. जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हो, let me know your answer in the chat section. Okay, hope all of you got a chance to read this. Correct. Option A. Consider merit pay for teachers. Schools face constant pressure to change their management approaches to improve performance, which is usually assessed by standardized reading, math, and science scores.
In most school, teachers' pay is determined by seniority, years of total teaching experience, and credentials. तो तीन फैक्टर लेते हैं, एक seniority and total teaching experience and credentials. Most schools में these are the parameters जो teacher को उसका performance evaluation में use करते हैं. Pay is rarely based on performance, which is contrary to the belief among parents and private sector. Now this there is a क्या बोलते हैं conflict of thought that parents and private sector सोचते हैं that performance should matter more rather than seniority, teaching experience, credentials, मतलब कौन से कॉलेज से वो पढ़े हैं या वो कौन सी यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हुए हैं. तो पहले इस बेसिस पे इवैल्यूएशन हो रहा था, बट पेरेंट्स एंड प्राइवेट जो एंटिटीज है दे डिमांड दिस. प्राइवेट एंटिटीज मतलब मान लो समवन हु हैज इन्वेस्टेड इन स्कूल एंड दे वांट द बेटरमेंट ऑफ द स्कूल, सो दे विल इंटरफियर विद द स्कूल मैटर्स. तो उनके हिसाब से टीचर्स का परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करता है rather than seniority, experience and credentials. Of course it does matter, but performance matters more. Parents and business leaders lament, okay, that lament मतलब they are unhappy that there are no carrot sticks used to motivate teachers. Okay, that means there's no motivation incentive mechanism. Okay, there is no incentive mechanism to motivate teachers. Consequently, there has been greater push to implement some form of merit pay to improve the motivation. So this is what they feel. तो एक school of thought है that जो senior teachers or more experienced, they have better credentials, तो उनका assessment में ज़्यादा score आता है. But parents and private entities, they believe performance matters more. Class में क्या feedback आ रहा है, how motivated the teacher is to teach to the students, irrespective of seniority and years of experience. That is what matters. So two schools of thoughts. We cannot say any one is correct or wrong, and the passage is too short to actually comment on any school of thought. And ये सही है वो गलत है ये बोलना थोड़ा difficult होगा in this case. Okay. So a question is saying which of the following statements will disprove. Okay. Purpose of the question, try and understand which of the following statements will disprove the claim of the parents and the business leaders. What is it that the parents are claiming? कि आप अगर इंसेंटिव मैकेनिज्म नहीं करोगे, कैरेट स्टिक अरेंजमेंट जो बोल रहे हैं, तो टीचर्स विल नॉट बी मोटिवेटेड. So if they will not be motivated, how can they perform better, irrespective of seniority, experience and credentials? So this is what the claim of the parents is. तो हमें ऑप्शंस में देखना है which of the following statements will disprove their claim. Okay, हम नहीं बोल रहे वो गलत बोल रहे हैं, बट ऑप्शन से देखना है कि ये ऑप्शन अगर सही है तो इट इज गोइंग टू डिस्प्रूव देयर क्लेम. First option, a recent study suggested that teachers are self-motivated. If this is true, तो उनका कोई इंसेंटिव मैकेनिज्म उनके लिए चाहिए नहीं. Why will they only be motivated when there are incentives? Teachers are self-motivated. If this is true, clearly it is disproving the claim of parents that नहीं इनको मोटिवेट करने के लिए पैसा चाहिए. So this can be my answer. Okay. Teachers are largely motivated by financial incentives. So pay performance will induce greater and तो ये disprove नहीं कर रहा है, ये prove कर रहा है. So this is rather proving, not disproving. तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. Learning cannot be measured reliably and accurately by a test given once a year. Again, this is hardly correlated to the problem statement. तो ज़्यादा कुछ ये help करेगा नहीं. Teaching is a solo activity. There is a little interdependence with other co-curricular and extracurricular activities in the school. Again, not helping much. Swear is human and hence stick should be used to reduce it. ये तो completely nonsense argument यहाँ पे. Clearly option A is the answer. Not a difficult choice to make here. समझ रहे हो how to approach these questions, how to think about these questions. Hope it makes sense. Let's take a look at this one. Krishna Reddy was the head of a pharmaceutical company that was trying to develop a new product. Reddy along with his friend Prabhakar Rao assessed that such products has mixed success. Reddy and Rao realized that if a new product was a success, तो अगर वो success है,
So it will result in a revenue of 100 crores, and if it is unsuccessful, failure, then it will result in a revenue of only 20 crores. They further assess that the new drug was likely to be successful. दोनों के chances 50% 50% है. The cost of launching the new drug was likely to be 50 crores. The cost is like 50 crores. So what is the expected revenue? 100 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, and क्योंकि दोनों का probability 50% तो 60 crores. Hence I can say okay, profit 10 crores. क्योंकि cost 50 crores है, revenue expected 60 crores है. Now this is something like common sense है, that क्यों मैं 60 crores लूंगा revenue, जो expected revenue को, because अभी मैं जब प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, इट कैन बी अ सक्सेस ऑल्सो, तो वाई टेक 60? ऐसा भी तो हो सकता था माई प्रॉफिट इज 50 crores, बट ऐसे भी हो सकता था दैट लॉस इज 20 crores. So that means if I am taking n number of iterations of product launch, so half the times it will be success, so half the times it will be unsuccessful. So overall average expected revenue is 60 crores. तो उस नंबर को लेंगे रियलिस्टिक के हिसाब से. हो सकता है मे बी दिस टाइम इट्स अ सक्सेस एंड मेरा 50 crores प्रॉफिट हो सकता है, बट फॉर कैलकुलेशन से एक n नंबर ऑफ आइटरेशंस में एवरेज एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इज 60 crores. ओके, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस रहते हैं. Okay, this is a very interesting, and I personally like this set very much. So read this. क्या problem है यहाँ पे, and what should be the answer? What should be the answer to this? Let's read the problem statement once. Okay, hope all of you got a chance to read this. A pastor had eaten at a restaurant with his troop of 10 and his family. तो बड़ा ग्रुप लेके वो खा के आया रेस्टोरेंट में. इट इज अ नॉर्म to tip the waiter, and about 20% of a waiter's salary comes from this tips. 20%, so a significant number. So that what is the purpose of this state like sentence? The sentence says that for a waiter tips do matter. Okay, क्योंकि उनका सैलरी का 20% होता है. However, while paying the bill, the pastor crossed out of the automatic 18% tip charged for parties of more than 8. तो वो उनका बिल में 18% टिप चार्ज था, वो उसको कट कर दिया वो अपने आप, एंड वहां पे लिखा आई गिव गॉड 10%, व्हाई डू यू गेट 18%, एंड फिर वो साइन किया उसका सिग्नेचर के ऊपर. नाउ द शैग्रिन्ड वेट्रेस, शैग्रिन मतलब एम्बैरेस्ड, ओके, ह्यूमिलिएटेड वेट्रेस एट द रेस्टोरेंट पोस्टेड अ फोटो ऑफ दिस ऑन द सोशल मीडिया. तो ये जो वेट्रेस थी वो क्या की, उसको बुरा लगा तो उसका फोटो लेके वो सोशल मीडिया पे पुट कर दी. ओके, शी वाज सब्सिक्वेंटली फायर्ड फॉर वायलेटिंग कंपनीज पॉलिसी ऑन कस्टमर प्राइवेसी.
And this would have been understandable if the restaurant had not posted just 2 weeks ago a customer receipt that was complimenting them. Now ये थोड़ा हो गया diabolical ambivalent type दोगलापन जो दैट अगर कस्टमर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड उसको हम पोस्ट कर रहे हैं दैट इज नॉट वायलेटिंग कस्टमर्स प्राइवेसी बट अगर कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है एंड उसको हम पोस्ट कर रहे हैं दैट इज वायलेटिंग कस्टमर्स प्राइवेसी so that is kind of an ambivalent stance, okay, on the companies or on the restaurants management behalf. Social media and social activists came heavily upon matlab criticized heavily upon the management's ambivalent stand and firing of the waitress. In response, the company posted a note on their social media page defending their actions. तो ह्यूज प्रोटेस्ट एंड ऑल क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा अभी मैनेजमेंट को, क्योंकि उन्होंने एक तो वेट्रेस को फायर कर दिया एंड ये जो दोगलापन है. But management is not giving up. They posted a note on their social media page defending their action. So they think they have done correct. This quickly drew over 10,000 comments, mostly negative, to which the management started responding by posting the same note over and over again. Now this is a sign of rigidity on the management behalf. As a business, you should always be responsive of the market reactions. You shouldn't be rigid on your thoughts. Okay, firm hona and rigid hone mein there's a very subtle difference. Okay, as a business, your decisions should be firm. It shouldn't be rigid. Rigid means you are unwilling to change even if things have gone wrong. You are not willing to adapt even if things have gone wrong. Firm means you believe this will work. Maybe things are not going right at this point, but you believe that it can work. So there's a subtle difference. तो यहाँ पे द मैनेजमेंट इज क्लियरली बीइंग रिजिड एंड नॉट टेकिंग द मार्केट सेंटिमेंट्स, क्योंकि ये जो कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, ये तो कोई एक पर्सन नहीं कर रहा है, बहुत लोगों को वो लग रहा है. तो मे बी द मैनेजमेंट शुड इंट्रोस्पेक्ट एंड अगर भी वो अग्री नहीं करते, रेस्पॉन्डिंग नेगेटिवली एंड पोस्टिंग द सेम नोट ओवर एंड ओवर अगेन is creating a negative image of the management. In the long run, it will impact the restaurant business because it is very customer centric. रेस्टोरेंट बिजनेस में ब्रांड नेम एंड रेस्टोरेंट का नेम मैटर बहुत करता है. तो अगर ये ऐसा करते जाएंगे तो वो बैड माउथ बहुत जल्दी होगा एंड विल अफेक्ट द बिजनेस. There were also accusations of the company deleting negative comments and blocking users. Now this has again crossed the line. The restaurant also experienced a sizable drop in their footfall. होना ही था. Now who or what is the main cause of the situation becoming unmanageable? Okay, correct D. Who or what is the main cause for the situation becoming unmanageable? So who is mostly responsible? Primarily situation out of hand क्यों हो गया? The pastor for flouting the norm of the restaurant? Not really. वो maybe this is some like a weird customer हम बोल सकते हैं, arrogant उस कैटेगरी में पुट कर सकते हैं. होता है रेस्टोरेंट बिजनेस में, ऐसे बहुत टाइप के लोग आते हैं. तो that person has not made this situation unmanageable. तो waitress for violating customer privacy, now this is again debatable. Customer privacy को actually वो violate की तो उसको तो fire हो गए. Why has the situation become unmanageable? Management for not taking action against the pastor. अब management pastor के against action लेता तो ये ऐसा हो जाता. नो, अनमैनेजेबल यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट्स ये जो सोशल मीडिया पे जो आउटरीच हो गया है फॉर दिस स्मॉल इंसिडेंट and it no longer concerns the pastor, restaurant and the waitress. It has become public now. तो ये जो पब्लिक हो गया, इनिशिएट तो वेट्रेस ने की, बट ये जो मैनेजमेंट बार बार अभी रिएक्ट कर रहा है. मे बी इफ द मैनेजमेंट वुड हैव शट साइलेंस पे वो रहता एंड दे वुडंट हैव रेस्पॉन्डेड टू एवरी कमेंट. नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट करते एंड ऑल, ये सब चीजें नहीं करते. दे वुड नॉट हैव इंडल्ज्ड बेसिकली. So maybe the things would have not gone out of hand. Okay. Management for removing negative comments from social media. Negative comments remove करने से unmanageable नहीं हुआ. What triggered the situation is the disproportionate punishment to the waitress. Now the management could have, even if the management thought the waitress is wrong, the management could have punished the waitress in some different kind of way. Salary cut maybe, a warning maybe, or maybe the management could have asked the waitress to apologize to the pastor. Yeah, apologize thoda publicly, something like that. But taking away someone's job just on the basis of one incident,
जहाँ पे if you yourself can delete the negative comments and block users, तो why can't the waitress delete her own post? अगर वैसे हम सोचें, I'm not saying वैसा करना है, but that could have also been done. एक पोस्ट की वजह से किसी का जॉब ले लेना, it's a little disproportionate. So that is what made the situation unmanageable and ज़्यादा protest and all उसी से ही start हुआ है. Make sense? All right. So what will be the answer of this? Try solving this. इसका क्या आंसर आएगा? Feel free to discuss if you have second thoughts or you disagree to what I'm saying or my lines of argument. It's something you disagree with. Please feel free to share your thoughts. Okay. The downward spiral continued for the restaurant B. Correct. Correct. As the management persisted in defending their actions. तो management ये करता रहा. They are not changing. वो अपना actions defend कर रहे हैं and argued with those who criticized them. By following with the original post had generated over 18,000 negative comments. It's huge now. Which of the following is the best way forward for the restaurant at this juncture? अभी रेस्टोरेंट को क्या करना चाहिए? बिजनेस में लॉस हो रहा है, पब्लिक में बैड माउथ हो गया, तो रेपुटेशन भी खराब हो गया, लॉट ऑफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग, तो व्हाट शुड यू डू डैमेज कंट्रोल में? Unconditionally restore the waitress to her former position and salary on the ground that she was never at fault in the first place. If the management does this, good, ठीक है, but then it will clearly show that management पूरा एकदम unreasonable था and पागल जैसा punishment कभी भी दे देता है, कभी भी restore कर लेता है, will not help that much. Trust factor में issue होगा. Apologize to and reinstate the waitress and ask her to apologize for a breach of customer privacy and post both the apologies on the social media. Now this is a little constructive, isn't it? Correct, correct. B. This is a little constructive because यहाँ पे वो खुद भी apologies दे रहा है and the waitress is also apologizing to win-win. तो ये जो लोग इतने protest कर रहे थे, तो वो भी थोड़ा calm down हो गए. No, the waitress is agreeing that she was at fault also, so we shouldn't like only blame the management as well. But then our demands are also met. उसको वापस नौकरी में ले लिए, so good for us. So it will somehow restore. To which this should be the answer. Let us see the other things. Reinstate the waitress provided she apologizes for a breach of customer privacy. And so this is again biased, one-sided. खुद का गलती नहीं मान रहे, उससे गलती मनवा रहे हैं, तो that is again biased. Reinstate the waitress if and only if she apologizes for a breach of customer privacy. तो again definitely not. अगर ये नहीं C नहीं हो रहा है तो D कैसे होगा? Recruit the waitress at a higher wage. Recruit two waitresses at higher wage, but stick to the original decision. ये और भी पागलपन है, क्योंकि एक तो रेस्टोरेंट का बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, तुम और दो वेटरेस को ला रहे हो वो भी हायर वेज में, तो इट्स नॉट इकोनॉमिक एंड इट्स नॉट लाइक साउंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. ओके, all right, try this one again. Quite interesting this question is. रीड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन पहले, फिर आराम से आंसर कर सकते हैं. पहले क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझ जाओ है क्या.
People who are attending this live, do like the session. Okay, I think all of you have read this. Let's try and understand. Vimla is the domestic help for Shreya and her neighbor Padma. ERI, correct, correct, correct. E, yes, correct. Both live in a posh gated community, तो अच्छा society में रह रहे हैं. Bimla not only cleans the house but also cooks for both the families. Bimla is the domestic help for Shreya and her neighbor Padma. तो दोनों families के लिए वो सारा household chores she is doing and also cooking. Shreya treasures Bimla ever since she joined her family 4 years ago. तो 4 साल से श्रेया के लिए काम कर रहे हैं. श्रेया बिमला को बहुत पसंद करती है, अच्छा काम कर रही है, ट्रस्टेड. बिमला ज्वाइंट पद्मा's household this year. Try and think of the situation. बिमला जो श्रेया एंड पद्मा आर नेबर्स. बिमला श्रेया के साथ बहुत दिन से एसोसिएटेड है. श्रेया लाइक्स बिमला, वो अच्छा काम करती है. अभी 1 साल से पद्मा के घर पे भी बिमला जा रही है काम करने के लिए. One evening, Shreya, trying to pay the pizza delivery, was surprised to find a few 500 rupee notes missing from her purse that she was sure were there earlier. Okay, चोरी का मामला हो गया अभी. So she found a few 500 notes missing and उसे पता था यहाँ पे था. She wants to ascertain if someone has stolen the money. On reflecting, the following facts crossed her mind. In the last 1 year, Shreya had noticed cash missing on 3 occasions. तो ऐसे 3 बार हो चुका है. Cash missing on 3 occasions. Second, Shreya's husband also shared that a few notes were missing from his wallet, though he was not sure if they were stolen. ठीक है, उसका husband sure नहीं, but उसे भी लग रहा है उसका भी पैसा गायब हुआ है. Her eldest son had been pestering Shreya for more pocket money for the last 3 weeks. In the last few days, he had stopped doing so. Now, this is something. उसका जो eldest son है, he has been pestering for more pocket money. लास्ट 2-3 हफ्ते से वो बंद कर दिया. In the last 1 year, Bimla had received 6 mails from her family asking for money. अब बिमला का फैमिली में मॉनिटरी इमरजेंसी है. Her eldest son's expenditure had gone up in the last few days. तो क्लियरली ये पांचों स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद श्रेया इज इंट्रोस्पेक्टिंग या मे बी रिफ्लेक्टिंग ऑन द फैक्ट कि ये दोनों में से कोई एक हो सकता है. इज इट माई ओन सन? बिमला, अभी बिमला का पैसे का भी रिक्वायरमेंट है, बट आई ट्रस्ट हर. ऐसा कोई इशू पहले बिमला के साथ तो हुआ नहीं है, बट लास्ट 1 ईयर से उसके ऊपर प्रेशर डालने, शायद प्रेशर में चोरी कर ली हो, या मे बी माई सन इज डूइंग दिस. बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब बायसनेस तो रहता है ये सन के लिए, बट वो ये फैक्ट्स भी है, सन का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, पहले पॉकेट मनी के लिए बोल रहा था अभी नहीं बोल रहा है, तो व्हाट हैज चेंज्ड. तो ये सब वो सोच रही है. Which of the following combinations of the above statements would decrease? Understand this. Which combination of the statements would decrease the likelihood that Bimla has stolen the money? तो बिमला चोरी ना करने का लाइक्लीहुड, मतलब चोरी ना करे, वो कैसे होगा जब मोर ब्लेम इज ऑन द सन. तो सन के बारे में कहाँ पे बोल रहा है? अब 3 and 5 में, 3 में बोल रहा है अभी बंद कर दिया पैसा मांगना एंड उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो क्लियरली इट इज ऑप्शन ई. क्वाइट इजी, तो बहुत इजी चॉइस है.
समझ रहे हो all of you? So think about this. These kind of questions when they come in the exam, you will never find it difficult to solve these questions. Exam point of view say you will never find it difficult to solve such questions. What will be challenging is whether you get it correct or not. क्योंकि तुम हो सकता है सारे 21 questions से 21 questions you can solve, but whether you can get it correct, that is the bigger challenge. All right, let's look at this one. What should she do here? What should she do here? Arrange the following combinations of the actions in the decreasing order of appropriateness. Decreasing order of appropriateness. That means first most appropriate and followed by least appropriate last for it. Decreasing order of appropriateness. Make an attempt, make an attempt. कितना आ रहा है? D correct, correct. What are the actions? She should let it pass since to her is human. ठीक है, she can let it pass but she should know कहाँ जा रहे हैं पैसे. So one cannot be my answer. Most appropriate तो one हो नहीं सकता. So A rejected. She should confront Vimla and tell her that she knows the truth and the act is unpardonable regardless of her past service and she is thinking of terminating. Again, this is biased. तो ये तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता, मे बी लीस्ट अप्रोप्रिएट होगा. अप्रोप्रिएट को अभी इसके रूल आउट करते हैं. दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट. She should tell Bimla that she is aware someone has stolen money from the house but is not sure who it is. ये हो सकता है. Maybe Bimla knows who it is, or maybe if she is stealing, she will be careful and she will not do that. Okay, maybe or maybe she can read Bimla's का facial reactions में is she like has she actually done it or not. Direct blame देना थोड़ा problematic है. She should share with Bimla that neighbors think Bimla has stolen the money, though she doesn't, but is interested in finding out the truth. This also makes sense. वो थोड़ा बिमला के साथ शी इज प्लेइंग माइंड गेम एग्जैक्टली नहीं, बट शी इज ट्राइंग टू से बिमला दैट शी ट्रस्ट हर, बट नेबर उसको ब्लेम कर रहे हैं. तो अगर वो कर रही है तो या तो मान जाए, अगर नहीं तो बंद कर दे, और एल्स हेल्प फॉर फाइंडिंग द ट्रूथ दैट कौन एक्चुअली कर रहा है. दिस इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट. 3 तो अप्रोप्रिएट है ही. शी शुड टेल डायरेक्टली, she should directly ask Bimla if she stole the money, promising her no punishment if she confesses. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे 3 ही है. 2 तो अप्रोप्रिएट है ही नहीं टोटली, तो 2 जहाँ पे है वो इग्नोर हो गया. तो बाय डिफॉल्ट आई एम लेफ्ट विद द ओनली ऑप्शन दैट इज डी. करेक्ट. बिकॉज 2 कैन नॉट बी एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन. तुम सीधा किसी को कन्फ्रंट करो, मुझे पता है तुम चोरी कर रहे हो एंड इट इज अनपार्डनेबल and I am going to terminate it. So you don't giving the other person a chance. You are not even giving the other person chance to explain. Maybe और कोई चोरी कर रहा है, तुम सोचे भी नहीं, तो how is it appropriate? And फिर order of appropriateness तो is the secondary point. It's not even appropriate at all. All right. Read this one, all of you.
Understand the scope of the question first. Alright, I hope all of you got a chance to read. Genius Consulting is a boutique consulting firm and started by Shiris, Balram, Rahman, and Xavier, four friends from a premier B school. They committed themselves to abide by two principles. Not indulge in anything unethical and share earnings equally. Now, this consulting could not get a significant project till the following year when they managed a big one after Rahman's father referred their firm to his top management. तो one of their co-founders का father उन्हें refer किया उसके company का top management में, तो उन्हें अभी एक project मिला है significant. Convinced of the team's talent following an impressive presentation, the top management awarded them a project even though 6 other referred teams made presentation. This is important. It's not like only their team was referred, 6 other teams were referred also. रेफरल समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि देख लीजिए, तो एक गोइंग वन स्टेप अहेड एंड रेफरिंग. तो ऐसा नहीं कि इनका अकेला रेफरल था एंड इन्हें मिल गया, 6 अदर रेफर टीम्स वर आल्सो देयर. नाउ द डे फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन, प्रज्ञा ई आ रहा है, ओके ओके, लेट्स सी. द डे फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन दे मेट टू डिसाइड द वे फॉरवर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो डे फॉलोइंग मतलब प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट डे अभी वो डिसाइड कर रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. विच आर द फॉलोइंग चॉइसेस would be the most appropriate for the consulting firm. As this project violates both their principles, Genius Consulting should not take up the project. Is it actually violating both their? Did they indulge in anything unethical? And both the principles sharing earnings equally. यहाँ पे तो कोई earning unequal होने का कोई बोला नहीं है, तो both the principles, so I can ignore this. Due to the violation of the first principle, they should not take up the project. Is the first principle violated? No. ऐसा नहीं कि उनको कोई पर्टिकुलर फेवर मिला. 6 अदर रेफर टीम्स में 7 टीम्स थे, सबको रेफरल मिला था, उनमें से ये सिलेक्ट हुए बिकॉज ऑफ द टैलेंट, नॉट एनीथिंग अनएथिकल. दे शुड टेक अप द प्रोजेक्ट फर्दर सिंस रहमान हैड अग्रीड टू इक्वल शेयरिंग. ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू अ फाइंडर्स फी. दिस इज एक्चुअली फेयर. रहमान अभी बोल नहीं सकता कि मेरे पापा लाए थे तो हमें रेफर किए थे, मेरे को एक फाइंडर्स फी दो प्रोजेक्ट के लिए, तो नो. ओके, इट इज कंप्लीटली अनबायस्ड एंड एथिकल वे में उनको मिला है, तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू अ फाइंडर्स फी. दिस इज मोर एथिकल एंड दे शुड टेक अप द प्रोजेक्ट बिकॉज उनका अभी तक कुछ प्रोजेक्ट उन्हें मिला नहीं. दे शुड टेक अप द प्रोजेक्ट एंड द रेफरल हेल्प देम सर्वाइव. रहमान शुड बी पेड. नो, दिस विल बिकम अनएथिकल. द मोमेंट रहमान फाइंडर्स फी ले रहा है, देन द प्रॉब्लम विल अराइज, बिकॉज फिर वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किया, नॉट फॉर द कंपनी. They should take up the project, but in order to not violate the principles, Rahman can be paid the finder's fee this year and an equal amount be deducted from his compensation the next year. This doesn't make more sense. क्यों? Because think about this, वो co-founders हैं, so everyone is supposed to bring in business. कंसल्टिंग में क्या होता है, एवरी लाइक कंसल्टेंट विल ब्रिंग इन देयर ओन क्लाइंट, सपोज, तो क्लाइंट को सर्विस देना उसका काम है. बट मैं क्लाइंट लाया इसीलिए मुझे ज़्यादा पैसा मिले या फाइंडर्स फी मिले, especially when the company is not making any business. And Rahman didn't bring the client.
रहमान का फादर रेफर किए बिकॉज ही थिंक्स कि चलो मेरे बेटे के दोस्त सब मिलके ये स्टार्ट किए हैं, तो वी कैन लाइक रेफर, अगर मेरे कंपनी में रिक्वायरमेंट है मैं रेफर कर देता हूँ, अगर उनका टैलेंट है उन्हें मिलेगा। तो व्हाट डिड रहमान डू टू गेट द फाइंडर्स फी? समझ रहे हो? तो रहमान को फाइंडर्स फी देना कोई बात नहीं है। तो विल गो विथ ऑप्शन सी। समझ रहे हो? होप दिस इज क्लियर। तो यू गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हो गए या मे बी यू हैव नॉट सॉल्व सो मच ऑफ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, यू गॉट एन आइडिया व्हाट दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड कैसे सोचा जाता है क्वेश्चंस में, एंड दिस फ्रेमवर्क दैट आई रोट हियर वेरी इंपॉर्टेंट। नो एक्सट्रीम एक्शंस, यू हैव टू टेक ऑल स्टेक होल्डर्स एंड पॉजिटिव लॉन्ग टर्म, नो बायसनेस, ये सारे फैक्टर्स तुम्हें माइंड में रखने चाहिए व्हाइल यू आर मेकिंग एनी डिसीजन। ठीक है? So this was the first marathon, and we'll continue with more sessions on this. Two big marathons I have planned next. तो वो दो मैराथन में इफ़ यू आर फ्री डू पार्टिसिपेट, यही यूट्यूब में ही आई विल डू। तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे जस्ट जो recent years के questions. In the second marathon session I will complete this, and you can check out these sessions. Join me for my special classes on the Unacademy class platform also. ठीक है? तो कमिंग सेशन में विल बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस। जस्ट अ क्विक बैच अनाउंसमेंट, जीरो टू जेनिथ बैच कैट 2023 का जनवरी 5th से स्टार्ट हो रहा है। दीज आर द यूएसपीज ऑफ द बैच। एंड ये एक इनविंसिबल बैच 22nd को स्टार्ट हुआ है 2023 का। तो दोज हु आर प्लानिंग फॉर ज्वाइनिंग 2023 बैच, एन ऑफर 23% ऑफ चल रहा है अभी। तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच, जेनिथ बैच, जनवरी 5th से जो स्टार्ट हो रहा है, गेटिंग ए 23% ऑफ। यूज माई कोड दास लाइफ, and depending on your requirement plus your iconic subscription you can choose. So that is it from my end for this session. Thank you all for joining. Hope you guys like the session. Do like the session if you haven't yet, and subscribe to our Unacademy CAT-alyst channel. Share it with your friends also जो लोग XAT के लिए prepare हो रहे हैं. Do feel free to give your suggestions and feedback, and we'll meet again very soon in the next session. Tomorrow quants का भी है and decision making का भी है. तो कल अगेन मिलते हैं। टिल देन कीप सॉल्विंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।